Okay, fine. Thank you. So, good evening again. Welcome to Synapse Academy. So, today we will study the rest part of the inflation. Inflation, jaha bonchi jaichi, ame types of inflation, causes padiche. Okay, stagflation, kono, inflation, deflation, all these things we have covered. Definition cover kariche. Then today we will discuss the most important thing, the indices to measure the inflation. Inflation measurement ro index kon kon. ठीक अछि? Economy always should be read as a story. So inflation technical जिनस जिते सिंप्लीफाई करके हम पढ़दो सेते इजीली मन रहि जो ठीक अछि तो आज गोटे स्टोरी हिसाब रे हम पढ़िबा जेमति कि इन्फ्लेशन इंडेक्स माने के बुलिबन क्वेश्चन पढुची सब बेले किछि फैक्चुअल डिटेल्स अछि जानिबा बट more important in civil service preparation always is concept. Okay, so you should have a clear picture of what we are reading. I mean kon पढुची तार clear picture ओटा माइंड रे आसियार अछि ठीक अछि. Okay, so how we measure inflation, WPI, CPI, GDP deflator, इस जिंस अछि. But before that, okay, let us start a story, then we will move to your technical details. ठीक अछि. Okay, PPI. See, this is the factory. What a factory is. Okay, this is a chimney. A chimney room, smoke barge. ठीक अछि. Factory production हला. ठीक अछि. Then it production हला परे आसला कोठी की होलसेलर गोटे शॉप अछि ता पाखु आसला. ठीक अछि. होलसेलर शॉप. होलसेलर पाखु का पाखु आसला रिटेलर पाखु आसला. रिटेलर पाखु समस्त आसे कि आमे गले तमे गले समस्त गले एंड जाई समस्त रिटेलर पाखु जिंस नै कि आसले. ओके आमन होचे साधारण जनता. ओके ठीक अछि. सो आमे गले रिटेलर पाखु जिंस नै कि आसले. ठीक अछि. सो इन्फ्लेशन आमे जति कहबा इकोनॉमी रे इन्फ्लेशन होछ ता माने नॉर्मली हम कोन होछ नॉर्मली हम होचे जे एमाने जो जिंस किणु चंती ठीक अछि. एमाने जो जिंस किणु चंती से जिंसटा महंगा हो जाउछ तार प्राइस अधिक हो जाउछ. ठीक अछि. बट inflation is not only measured at the level of these persons. Citizen मानक लेवल ले केवल मेजर हुए नाही. ठीक अछि. It is measured at this level also. ठीक अछि. At this level also and at this level also. Okay, so at the three important levels, at the level of retailer, or you can say retailer level le consumer man rohuchunti, at the level of consumer, and the level of wholesaler, and at the level of producer. So this is P, this is W, and this is C. From these first three letters, we got three inflation indices: producer price index, wholesale price index, from C, consumer price index. सरला ये तीनटा मु जानियार अछि कोन ए तीनटा ही मेन जिंस प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. एठी आगुडी जिंस बुझिबा तापर हम डिटेल बुझिबा बिकॉज़ बुझिबाटा बहुत इंपोर्टेंट. प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, प्रोड्यूसर जेतल गोटे गुड्स प्रोड्यूस करूची, प्रोड्यूसर कोन प्रोड्यूस करिवो, इट विल प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक अछि. गुड्स एंड सर्विस जो प्रोड्यूस कला सेटा मार्केट को आसिला. ठीक अछि. एटा होची मार्केट. मार्केट को आसिला. मार्केट को आसिला परे आ ऊपर टैक्स लागिला. ठीक अछि. टैक्स लागिला परे आसिला होलसेलर पाखु. बट होलसेलर सर्विस प्रोड्यूस करे कि सर्विस परचेज करे कि सर्विस सेल करे. डायरेक्ट सर्विस प्रोड्यूसर पाखु डायरेक्ट कंज्यूमर माने होते. ठीक अछि. So wholesaler mainly it purchases the goods. Okay, so से कौन कला गुड्स परचेज कला.
गुड्स परचेज करके अगेन देला का रिटेलर को, रिटेलर बिकला कंज्यूमर। ओके, सो एठी कोन लागुची गोटे प्रोडक्ट, सपोज दिस इज द हमाम साबुन, ठीक अछि, सोप, पीस ऑफ हमाम सोप। ओके, तो प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस कला मार्केट को आसला ऊपर ता ऊपर टैक्स लागिला, ठीक अछि। तो प्रोड्यूसर लेवल रे जोटा प्रोड्यूस होची दैट एक्सक्लूड्स टैक्सेस। होलसेलर लेवल के जोटा आछी दैट इंक्लूड्स टैक्सेस, ठीक अछि। तो दिस इज द बेसिक थिंग यू नीड टू रिमेंबर। ओके, सर्विस प्रोडक्शन होची प्रोड्यूसर लेवल रे, बट होलसेलर लेवल रे ओनली गुड्स एक्शन रे अछि, सर्विस नाही। बेसिक जिंस कहूची तापरे रैपिड फायर ले सब कहि दे, सब बुझी जो, ठीक अछि। एंड रिटेलर लेवल ले कोन होची माने कंज्यूमर तो तार डिस्क्रिमिनेशन नाही, सी गुड्स भी कंज्यूम करिवो, सर्विस भी कंज्यूम करिवो, बोथ द थिंग्स कंज्यूम करिवो से। ता माने कोन हला, एट द लेवल ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज आर देयर, एट द लेवल ऑफ होलसेलर ओनली गुड्स आर देयर, एट द लेवल ऑफ कंज्यूमर both goods and services are there. This is the basic thing you need to remember before going into inflation. Kar doubt roila? Clear? Please in the chat box. Clear concept? After your response only I will move forward. Okay, बढ़िया। एति जिनस मन रखो, तापरे सब बुझी जो इन्फ्लेशन र कोन अछि। Okay, very good. चलो, we'll go to the first slide. Inflation is measured in academically आमे कहूचे इन्फ्लेशन मेजर करछे WPI, CPI, GDP डिफ्लेटर। आमे आ गोटे वे रे पढले प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, ठीक अछि। GDP डिफ्लेटर कांसेप्ट आमे पढिचे कोठी, नेशनल इनकम पे पढिचे, नेशनल इनकम चैप्टर पे पढिचे GDP डिफ्लेटर कांसेप्ट। इट जस्ट खाली पढे दवा, बट आवर मेजर फोकस विल बी ऑन WPI एंड CPI, ठीक अछि। चलो, एंड PPI आल्सो डिस्कशन रहयो। WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स। सी इनिशियली जेतेबेले हमरो इकोनॉमी धीरे धीरे मूव कला 1920 ऑनवर्ड्स आमे WPI ही यूज करथले, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक अछि। होलसेल प्राइस इंडेक्स काहे की ना, जेतेबेले सपोज दिस इज ए मार्केट, ओके, दिस इज ए मार्केट, एटा प्रोडक्शन हला एंड दिस इज द मार्केट, ठीक अछि। दिस इज द कंज्यूमर, ओके। तो जदि आमे होलसेल प्राइस इंडेक्स काहे ना इनिशियली जदि इकोनॉमी स्टार्ट हला सर्विस रो एते इंपोर्टेंस नथिला, ओनली गुड्स थिला, सर्विस एते नथिला इंपोर्टेंस। तो सेते बेले मेजर फोकस वाज ऑन गुड्स, ठीक अछि। तो सेति पई होलसेल मार्केट रे, होलसेल लेवल रे गुड्स रो प्राइस ता बढ़ुची कि कमुची आमे जानिया पे WPI आमे कले होलसेल प्राइस इंडेक्स। काहे की ना आमे देखिले जे जेते बेले मार्केट रू कंज्यूमर पाखु किछि भी जिंस जाउची, ठीक अछि। सपोज गोटे सोप मैन्युफैक्चरिंग हला, सेटा होलसेल दुकान रे पड़ी की अछि, ताकू कंज्यूमर किनिबो, कंज्यूमर केबे नबो, सेटा सेल हबो, दिस थिंग्स आर देयर। बट जेहेतु एटा टाइम टेकिंग जिंस कंज्यूमर लेवल रे असेसमेंट करिया पई, सेति पई होलसेल लेवल रे आमे प्राइस रो इंडेक्स टा कैलकुलेट करथले, ठीक अछि। कैलकुलेट करले कोन हो, आमे जानि परिबा जदि होलसेल दुकान रे गोटे साबुन रो कॉस्ट अधिक रहउची, ता माने कोन हेई पारे, आइदर सप्लाई बंद अछि, सप्लाई कम आसुची दुकान को, सेति पई प्राइस अधिक रहउची, ठीक अछि। मु मोरे ले मैन टर्म रे कहउछ, तुम बुझउछ, जदि गोटे होलसेल दुकान रे गोटे गुड्स रो प्राइस बढ़ी गला, ता माने कोन होची, सप्लाई कमी जाईची। तो आमे जानले कोन कि से दुकान को गोटे गुड्स आसी पारुनी, गोटे पीस ऑफ सोप इज नॉट रीचिंग दैट शॉप। व्हाई दैट इज नॉट रीचिंग दैट शॉप, बिकॉज़ किछि ट्रांसपोर्टर प्रॉब्लम अछि कि, किबा प्रोडक्शन रे प्रॉब्लम अछि कि, सप्लाई साइड रे प्रॉब्लम अछि कि, एनीथिंग इज देयर जोति पई कि होलसेल प्राइस ता बढ़िची। सो इकोनॉमी रे हमर आगुरु ट्रेंड से आथिला कि आमे होलसेल प्राइस इंडेक्स ऊपर बेसी डिपेंडेंट थिले, बेसी माने डिपेंडेंट ही थिले, होलसेल प्राइस इंडेक्स अनुसार ही हमर इन्फ्लेशन कैलकुलेट होतला, ठीक अछि। बट तापर हेला कोन, हमर इंडिया को जीडीपी कंट्रीब्यूशन कहार अधिका, एग्रीकल्चर ना इंडस्ट्री ना सर्विस, एनीबॉडी कार अधिका, एग्रीकल्चर ना इंडस्ट्री ना सर्विस, क्विक टाइप, वेरी सिंपल क्वेश्चन, यस सर्विस। तो जदि जीडीपी कंट्रीब्यूशन सर्विस रो अधिका हेला, मु कोन कहिली
whether this WPI does it include service? Does it include service WPI? Yes or no? सब तुम निजे ही कहबो मु किछ कहबिनी सब तुम निजे कहबो नो यस जदि सेटा सर्विस इंक्लूड करू नाही ता माने इकोनॉमी रो ग्रोथ होची सर्विस सेक्टर रे बट आमे गोटे इन्फ्लेशन इंडेक्स कैलकुलेट करूचे जोटा कि सर्विस इंक्लूड करू नाही सो कैन वी गेट द करेक्ट इकोनॉमिक डाटा पाई परिबा की नो दैट्स व्हाई आमर जो माने इकोनॉमिस्ट अछंती से माने भाबिले कि नाही आमे WPI जगह रे आउ गोटे इंडेक्स चिंता करबा जोटा होची CPI कहीं की ना CPI includes both goods and services crystal clear okay no confusion nothing ठीक अछि जहा कहबी you will never forget okay so gradually देखा गला there is a need for another index कहीं ना जेहेतु सर्विस ग्रोथ होची बट सर्विस ग्रोथ रे सर्विस ग्रोथ होची सर्विस कंजम्पशन होची कंज्यूमर माने सर्विस कंज्यूम करछंती कंज्यूमर माने सेपटे सर्विस कंज्यूम करछंती बट दैट सर्विस इज नॉट गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन आवर इन्फ्लेशन इंडेक्स WPI रे सर्विस रिफ्लेक्ट होनी अदरवाइज हमर इकोनॉमिक ग्रोथ हेलानी सर्विस रे लोक माने सर्विस कंज्यूम करलानी सो दिस विल नॉट गिव द करेक्ट इकोनॉमिक पिक्चर सो ग्रेजुअली हमें स्विच करले ना वी विल मूव टू CPI आमे CPI को जीवा ठीक अछि अच्छा CPI आमे ठीक अछि आमे एबे देखिबा WPI CPI बट CPI रु आमे काहे के आप ऊपर बेसी इंटरेस्टेड PPI प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स सेटा आ गुडे स्टोरी कहिबी बट फॉर द टाइम बीइंग लेट अस डिस्कस अबाउट WPI एंड CPI अच्छा मते एबे कुओ WPI CPI इवोल्यूशन केमिति हैला इकोनॉमी रे जानिबारे कार प्रॉब्लम हैला क्लियर क्रिस्टल क्लियर पिक्चर WPI कहीं की आसिला CPI कहीं की आसिला यस और नो ओके क्लियर वेरी गुड ठीक अछि अच्छा स्टिल WPI अछि कहीं ना देखो आमे CPI माने देखिले कि यस CPI हमको दरकार बट ता माने नहे कि वी विल मूव अवे कंप्लीटली फ्रॉम WPI कहीं कि ना हमको जानिबा दरकार जे जदी गोटे होलसेलर आउ कंज्यूमर आमे कहै प्रोड्यूसर होलसेलर एंड कंज्यूमर माने रिटेलर कंज्यूमर गोटे लेवल तो आमे जानले कि आमे कंप्लीटली CPI को स्विच करि परिबा नाही काहे करि परिबा नहीं कारण जदी आमे WPI छाडी दबा ताले होलसेल लेवल रे मु जोटा कहली गोटे दुकान रे सोप रो शॉर्टेज हे गला गोटे साबुन तमे खोजछो सेटा मिलुनी तो ता माने कोन कि सप्लाई साइड प्रॉब्लम थिबो जदी आमे WPI कैलकुलेशन न करिबा जानि परिबानी होलसेल लेवल रे at this level what is the problem ठीक अछि जदी हमें कंप्लीट WPI जानुचे WPI कैलकुलेट करछे ताले हमें जानि परिबानी कंज्यूमर लेवल रे कोन प्रॉब्लम तो हमें इकोनॉमी रे दीटा कैलकुलेट करछे वी आर कैलकुलेटिंग WPI आल्सो वी आर कैलकुलेटिंग CPI आल्सो बट आगुरो जोटा हमें टारगेट करछले WPI को दैट टारगेट इज नाउ चेंज्ड दैट इज नाउ CPI ठीक अछि सरल क्लियर देन वी विल डिस्कस व्हाट इज WPI and what is CPI see both WPI and CPI are calculated on monthly basis ठीक अछि both WPI and CPI are calculated on a monthly basis okay this is also calculated on a monthly basis this is also calculated on a monthly basis आउ मते कहिबा दरकार नहीं कि whether WPI includes goods or services or CPI includes goods or services कहया दरकार नहीं okay you all know that WPI includes only goods not services but CPI includes both goods and services clear कहया दरकार नहीं story mind रे okay economy रे if you are clear about the concepts if the picture is clear in your mind you can answer every question okay so CPI WPI रे कैलकुलेशन कोन होछ ओके फैक्ट्री गोटे प्रोडक्ट बाहरला होलसेलर पाखु गला ठीक अछि तो बिफोर दैट रीचेस द कंज्यूमर ओके बिफोर दैट रीचेस द कंज्यूमर WPI कैलकुलेट करे तार प्राइस ता
ठीक अछि तो ताको हमें कहि परिबा इट कैलकुलेट्स द एक्स फैक्ट्री प्राइस बिफोर इट रीचेस द कंज्यूमर ओके ठीक अछि अच्छा तो होलसेलर पाखकू जेतेबेले आसुची ठीक अछि तो देयर आर सर्टेन टैक्सेस आर बीइंग एडेड टू द प्रोडक्ट ठीक अछि तो जेतेबेले होलसेलर पाखकू गोटे प्रोडक्ट आसुची प्रोडक्ट ता ऊपरे किछि टैक्स ऐड ही होउची तो टैक्स ऐड ही वाला कोन होउची तो जेतेबेले कंज्यूमर पाखकू से प्रोडक्ट जाउची तार टैक्स अधिक ही होउची टैक्स बढ़ी जाउची टैक्स बढ़ी जाउची प्राइस भी बढ़ी जाउची ठीक अछि सो व्हाट हैपेंस सो जनरली कौन हुए बिफोर माने होलसेलर पाखु जोटा आसे इट डज नॉट इंक्लूड द इनडायरेक्ट टैक्स ओके जेतेबेले होलसेलर पाखु आसुची सेटा इनडायरेक्ट टैक्स ऐड होउनी जेतेबेले कंज्यूमर पाखु रिटेलर पाखु पळे जाउची सेतेबेले तारे टैक्स ऐड हे जाउची ठीक अछि मल्टीपल टैक्सेस आर बीइंग एडेड तो तार प्राइस बढ़ी जाउची तो जदी डब्ल्यूपीआई रे होलसेल टैक्स हमें ऐड करूना है ओके जदी डब्ल्यूपीआई रे हम होलसेल टैक्स ऐड करूने इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करूने सॉरी सो जितेबेले गवर्नमेंट रो टैक्सेशन थिंग्स आर चेंज्ड सो दैट इज लेस अफेक्टेड बाय फिस्कल पॉलिसी माने जदी गवर्नमेंट रो टैक्सेशन मेजर से कि चेंज होला डब्ल्यूपीआई इज लेस अफेक्टेड बाय फिस्कल पॉलिसी दैन माने सीपीआई काहे ना जेतेबेले टैक्स मेजर टैक्स इंक्लूड हो नाही सो डेफिनेटली इट विल बी लेस अफेक्टेड दैन सीपीआई ठीक अछि अच्छा बट सीपीआई अल्टीमेट जहां भी टैक्स जाउची एवरीथिंग गोस टू द कंज्यूमर ठीक अछि तो सीपीआई रे सब इनडायरेक्ट टैक्स भी इंक्लूड होची ओके ठीक अछि अच्छा नेक्स्ट थिंग वी विल डिस्कस जस्ट रिमेंबर कि जदी पचा हला कि व्हिच इज लेस अफेक्टेड बाय फिस्कल पॉलिसी इट इज डब्ल्यूपीआई लेस अफेक्टेड बाय द फिस्कल पॉलिसी ओके ठीक अछि अच्छा नेक्स्ट वी विल गो दैट तो जेहेतु डब्ल्यूपीआई तो कैलकुलेट करूचे ओके डब्ल्यूपीआई तो कैलकुलेट करूचे देखो तुम भाबुतो कि डब्ल्यूपीआई रे काहे कि हमें प्राइस इंक्लूड करू नै ओके देखो जेतेबेले कैलकुलेट होची डब्ल्यूपीआई when WPA is calculated then we do not include these prices computation रे do not include prices तो जदि मु WPI price is include कर देली CPI रे price include कर देली it will lead to double counting तो जेतेबेले हमर जेतेबेले कैलकुलेट करा होची WPI we do not include these things okay so WPI calculation रे एटा हमें यूज करू ना है ठीक अछि जदि हमें यूज करूने ता माने इनडायरेक्ट टैक्स न रहिले इनडायरेक्ट टैक्स होची इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट टैक्स बढ़िला कमिला सिगारेट ऊपर एतिक टैक्स परफ्यूम ऊपर एतिक टैक्स फूड ऊपर एतिक टैक्स प्रोसेस्ड फूड ऊपर एतिक टैक्स प्रति वर्ष बजेट रे बाहर छी ना तो जदी डब्ल्यूपीए रे इनडायरेक्ट टैक्स कैलकुलेशन हम यूज करू ना है सो it will be less impacted by the fiscal policy of the government ठीक अछि this is the thing you have to remember that in computation of WPI we do not include the indirect taxes that's why it is less impacted by the fiscal policy of the government के बुझी पारलनी ठीक अछि ओके बुझियला ना को डाउट रहला ता माने एतिकी मन रखो the indirect taxes are not included in the computation of prices for WPI एतिकी मन रखले क्लियर हो जिवो ठीक अछि ओके not calculated in the calculation of WPI we do not include the indirect taxes ठीक अछि एतिकी मन रखो it is the economic माने process सेथि पई ही it is less impacted by the fiscal policy of the government ओके चलो ठीक अछि एपन तो बुझियला ठीक अछि बुझिलु बहुत बड़ा कथा then regarding CPI CPI रे की टर्म होची कंज्यूमर okay so let us complete the WPI then we will move to CPI अच्छा WPI जेतले कैलकुलेशन होची होलसेल प्राइस इंडेक्स ठीक अछि तो राइट नाउ इट इज 2024 ठीक अछि जदि हमें 2024 रे प्राइस एस्टिमेट करिवा we have to take 1 year as a standard year that is called as base year
ओके गोटे जेकोसी ईयर को आम ईयर मार्क करवा कि दिस इज द स्टैंडर्ड ईयर एंड दैट ईयर इज नोन एज बेस ईयर बेस्ड ऑन दैट बेस ईयर benchmark or base year prices we calculate inflation for the further years upcoming year jaha bhi asibo base year hisab re calculate hobo ठीक अछि so this is the concept of base year okay so base year mane hochi it is the reference year for calculation of inflation very simple thing इतने कॉम्प्लिकेट करिया दरकार नहीं जस्ट रिमेंबर कि इट इज द रेफरेंस ईयर फॉर इन्फ्लेशन कैलकुलेशन रेफरेंस ईयर को यूज करके आमे इन्फ्लेशन को एस्टिमेट करू इन द अपकमिंग इयर्स ओके सो बेस ईयर जोटा आमे नेले हाउ दैट कम्स आमे केमी डिसाइड करा मु कहबी नाही मु 2010 को बेस ईयर नेबी somebody of you tell कि नाही मु 2015 को बेस ईयर नेबी आउ जन कहबा 2020 को बेस ईयर नेबी तो चलिबो झगड़ा चलिबो but there are certain criteria by which we decide what do you mean by a base year there are certain criteria by which we decide the base year ता माने कोन को क्राइटेरिया हिसाब हम यूज करछे गोटे ईयर रे जदी बहुत मानसून डेफिसिट हे गला मानसून एलिनो पळे आसला मानसून रेनफॉल हेलानी तापर प्राइस बढ़ी गला ता माने इन्फ्लेशन बढ़ी गला मु जदी से ईयर रे प्राइस कैलकुलेट करबी ता माने कोन हो डेफिनेटली प्राइस हाई देखेबो 2000 सपोज 2020 24 आए ई वर्ष माने कर एलिनो हिची तो राइस 1 केजी 15 रुपीस ता 25 केजी 25 रुपीस हिची तो मु जदी 2025 रे एस्टिमेट करबी इन्फ्लेशन मु कहबी जे राइस 2024 रे 25 रुपीस थिला whereas सेटा बिकॉज़ ऑफ मानसून डेफिशिएंट पई डेफिशिएंसी पई हिची तो इट विल गिव ए रॉन्ग रिजल्ट तो एमिति गोटे ईयर आमे कैलकुलेट करबा जो ईयर रे कि मानसून डेफिसिट बेसी नथिबो ड्रॉट नथिबो फैमिन नथिबो बेसी हाई इन्फ्लेशन नथिबो सेही भला ईयर को नै कि आमे बेस ईयर रखिबा जदी एई क्राइटेरिया को आमे सैटिस्फाई न करूचे ताले एमिति गोटे ईयर पळे आसे जो ईयर अधिक इन्फ्लेशन थिबो ठीक अछि जदी इन्फ्लेशन माने कर मु भूल कैलकुलेट करी कि 2015 टा बेस ईयर नै गली एंड 2015 में मोर इन्फ्लेशन थिला 4% मु जदी कैलकुलेट करबी 2024 रे मते देखाला 4.5% इन्फ्लेशन सपोज मु कहबी इन्फ्लेशन मात्र 0.5% बढ़ी छी बेसी तो बढ़ीनी देखला बेलू लोक उछन कर देनी पूरा प्राइस बढ़ी गला ये लोक कष्ट कष्ट होची किनी परना दे माने दे आर एंग्री ओके बट ग्राउंड रे हमें देखला बेलू इन्फ्लेशन बहुत अछि बट हमर इकोनॉमिक डाटा देखौची जे ओनली 0.5% इन्फ्लेशन अछि ठीक अछि गोटे एग्जांपल कहू छी बुझिया तो जदि एठी ए ईयर रे एमती गोटे ईयर ते जे 2015 में इन्फ्लेशन थिला 1% ठीक अछि बहुत कम थिला तो से ईयर को नेले जदि मु रेफरेंस ईयर नै छी एबे 4.5% अछि ता माने 3.5% इन्फ्लेशन अछि ता माने मु भाबिली कि किछि तो इकोनॉमी रे प्रॉब्लम होछि जोथि में 3% 3.5% गैप आछि ओके सो बेस ईयर ए हिसाब रे नबा कथा जो हिसाब रे कि प्राइस बेसी नथिबो वैगरेज ऑफ मानसून नथिबो डेफिशिएंट बेसी नथिबो मानसून रेनफॉल ठीक होतबो प्राइस स्टेबल थिबो ओके अच्छा द कांसेप्ट ऑफ बेस ईयर अच्छा नाउ बेस ईयर केते 2011 एंड 12 डब्ल्यूपीएम मेजरमेंट रो बेस ईयर 2011 12 बेस ईयर रे जेति कि रहिबो सेटा को हमें कहूचे 100 बेस पॉइंट 100 बेस पॉइंट ठीक अछि तो 100 बेस पॉइंट हिसाब रे सपोज मु 2011 12 रे मोर 100 बेस पॉइंट रहला 2024 रे मन करो 200 बेस पॉइंट हला ठीक अछि माने से हिसाब रे इन्फ्लेशन ट्वाइस ही छी टू टाइम्स ओके तो दिस इज द इकोनॉमिक कैलकुलेशन बट हमें फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम भाबु जे यस दिस इज द बुझिया पे हम कहू जे यस दिस इज द कांसेप्ट दिस इज द 100 बेस ईयर थिला एटा 200 हला ठीक अछि कार डाउट रहला इन दिस स्लाइड कार डाउट बेस ईयर कांसेप्ट के बुझी पालो नै इज इट क्लियर बेस ईयर कांसेप्ट क्लियर ओके वेरी गुड क्लियर चलो नेक्स्ट ओके अच्छा जो
WPI आछी ओके जो WPI आछी कैलकुलेट होची तो से WPI रे आमे कोन कहूचे होलसेल प्राइस इंडेक्स डजंट इंक्लूड द गुड्स ठीक अछि सॉरी डजंट इंक्लूड सर्विसेज तो ओनली कमोडिटी इंक्लूड करूची तो को कमोडिटी व्हिच कैटेगरी ऑफ कमोडिटीज आर इंक्लूडेड इन द WPI तो कमोडिटी कोन देयर आर रफली 697 कमोडिटीज taken into account while calculating the wholesale price index first thing okay so को कैटेगरी से कमोडिटी आछुंती गोटे होची प्राइमरी आर्टिकल्स माने बेसिक जिंस जोडा रहला तमरो माने खाइबा जिंस रहला माने cereals fruits vegetables these are primary articles जोटा बंचिया पे निहात दरकार ठीक अछि सेकंड कैटेगरी फ्यूल एंड पावर फ्यूल यू नो गाड़ी चलाय पे फ्यूल दरकार ओके फ्यूल एंड पावर इलेक्ट्रिसिटी ठीक अछि फ्यूल पावर दरकार ओके अच्छा मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट माने जहां मैन्युफैक्चर हेची माने को शैम्पू आसिला मार्केट को तमे चला दैट इज मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट ओके सो these are the three categories fuel and power primary articles manufactured product these are the three categories under which wholesale price index is calculated ethru सबुठु maximum weightage kahar manufactured products 64% weightage primary article weightage kete it is roughly around 20% ta mane bhabo je food जो जिनसटा अछि that is getting 20% weightage in WPI manufactured products are getting 64% weightage in WPI just remember this thing पछरे कोन हो कोन आर इंपोर्टेंस कोन कहि ठीक अछि so this is the concept of WPI okay ठीक अछि अच्छा then comes to the concept of CPI okay CPI then come to the concept of CPI अच्छा CPI माने हमें कौन जानले कि एट द लेवल ऑफ कंज्यूमर माने रिटेलर ओके डायग्राम माने पकाओ प्रोड्यूसर होलसेलर देन रिटेलर एट द लेवल ऑफ रिटेलर कोन प्राइस चेंज होची दैट इज द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सो अच्छा मते को द नेम इज कंज्यूमर माने somebody is consuming the products and the goods and the services जण के कंज्यूम करूची तो जे कंज्यूम करूची there is no uniform consumption ठीक अछि so there are few categories जो माने कि गोटे पर्टिकुलर प्रोडक्ट कंज्यूम करछंती ओके सो कंज्यूमर को हमें गोटे यूनिफॉर्म कंज्यूमर न नै कि हमें डिफरेंट कैटेगरी डिवाइड करछे काहे कि ना मेजर पीपल जो मान अछंती से माने से कैटेगरी के बिलोंग करछंती तो हमें ताको गोटे कैटेगरी रे नै गले हमें तांकर इन्फ्लेशन जानि परिबा सपोज मु कहली CPI रे there are 4 categories okay the category importance कोन हम जानि परिबा there are 4 categories first is industrial workers CPI IW industrial workers ता माने मेजॉरिटी बहुत लोक अछन जे इंडस्ट्री काम करछन ठीक अछि तो सेमानक रो कंजप्शन पैटर्न जदि हम देखिबा सेमानक रो गोटे अलगा इन्फ्लेशन इंडेक्स आसीबो आसले कोन हो हमें जानि परिबा जे इंडिया रो एतिकी लोक इंडस्ट्रियल वर्कर हिसाब रे काम करछन आ तांको पई CPI होची एतिकी जदि CPI IW बढ़ुची ता माने हमें जानिले जे इंडस्ट्रियल वर्कर को पई माने वे ऑफ लिविंग तांकर डेली लिविंग ता महंगा हे जाउची धीरे धीरे ठीक है जब तांको पई हमें किछि गोटे स्कीम करबा कि तांको किछि गोटे बेनिफिट दबा ठीक अछि तो जदि हम समस्त विषय जानि परिबे एका थरे कोन कहा पई कोन होची ठीक अछि तो इंडस्ट्रियल वर्कर को पई गोटे सेपरेट CPI अछि ओके सो ओपी से दिथर पाखा भाई क्वेश्चन पचलानी जे इंडस्ट्रियल वर्कर जो मान अछंती सेमानकर CPI कैलकुलेशन बेस ईयर केते सेमानकर CPI कैलकुलेशन बेस ईयर इज 2016 WPI बेस ईयर 2011-12 दैट इज सेपरेट बट CPI रो डिफरेंट कैटेगरी डिफरेंट बेस ईयर अछि ठीक अछि एंड दिस वाज आस्क्ड इन OPSC आल्सो CPI IW बेस ईयर केते 2016 ठीक अछि सो नेक्स्ट कैटेगरी जो मानक पई हमें CPI कैलकुलेट करछे दीज आर एग्रीकल्चर लेबरर्स जो माने एग्रीकल्चर सेक्टर काम करछन ह्यूज अमाउंट ऑफ लेबरर्स आर वर्किंग इन एग्रीकल्चर सेक्टर जदियो जीडीपी कंट्रीब्यूशन कम लोक बहुत काम करछन दैट इज कॉल्ड एज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ठीक अछि तो एग्रीकल्चर लेबरर माने जो काम करछन सेमानक पई गोटे अलग CPI कैलकुलेट कराउछ सेतुर हम जानि परिबा सेमानक ट्रेंड कोन होछि CPI बढ़ुछि कमुछि
तो सेमानकर जदि सीपीआई पडुची आमे जानले कि सेमानक पई जिंस महंगा हेइ चलची किछ गोटे कर इंटरवेंशन दियो ठीक अछि नहले डिस्ट्रेस बढ़िबो सुसाइड फार्मर सुसाइड हो चलिबो ठीक अछि तो प्रति सेगमेंट रो आमे सीपीआई डाटा कैलकुलेट करछे इंडस्ट्रियल वर्कर सेगमेंट रो कैलकुलेट करे एग्रीकल्चर लेबर सेगमेंट रो कैलकुलेट कले एग्रीकल्चर लेबर सेगमेंट रो बेस ईयर केते 1986 87 अच्छा एग्रीकल्चर जो माने काम करछन ठीक अछि आ गोटे सेगमेंट अछि जो माने रूरल लेबरर्स ओके तो सेमाने गोटे सेगमेंट सेमानक पई सीपीआई कैलकुलेट कले सेमानकर बेस ईयर 1986 87 ओके आउ गोटे नुवा सेगमेंट जोटा कि बाहर कले हमें ओके अर्बानाइजेशन जेहेतु बॉडी बॉडी चलला ओके अर्बानाइजेशन बॉडी बॉडी चलला लोक मान जाय अर्बान एरिया काम कले अर्बान एरिया रे एम्प्लॉयमेंट बढ़िला कंस्ट्रक्शन बढ़िला एम्प्लॉयमेंट हैला लोक माने माइग्रेट कले तो देखो इकोनॉमी केमति डिपेंड करूची माने ऑल दिस फैक्टर सोशल फैक्टर पर केमति डिपेंड करूची ओके माइग्रेशन ଗୋଟେ सोशल फैक्टर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पई हायर फैसिलिटी पई अर्बान एरिया को माइग्रेशन होची तो धीरे धीरे हमें देखिले कि हमको गोटे अर्बान सेगमेंट भी दरकार कहीं ना बहुत लोग जाई अर्बान एरिया काम करछंती तांको पई भी हमको सीपीआई दरकार तो हमें कोन कोले तांको पई भी गोटे रूरल अर्बान प्लस सीपीआई कंबाइंड एटा गोटे कैलकुलेट कले सीपीआई फॉर रूरल अर्बान एंड सीपीआई रूरल अर्बान कंबाइंड ओके तारा बेस ईयर होची 2012 so you have to remember these four things these are the four segments right now these are the four segments on which we calculate the CPIs one is your CPI for industrial workers CPI for agricultural laborers CPI for rural laborers and CPI for rural urban and CPI rural urban combined okay and the base year this is the base year is 2016 this is 86 87 this is 86 87 this is 2012 this has been asked in the OPSC or I think एटा भी बोधे पचरा है एटा कि एटा कोड आउट पचरा है देखि दो ठीक अछि ओके सो नेक्स्ट थिंग इज इन अच्छा समस्त सेगमेंट पे हमें कैलकुलेट कर देले बट एठी हमें कोन कोन कैलकुलेट करते रिलेटिव वेट कोन कोन नउछे ओके जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि जो फूड आइटम रो कंट्रीब्यूशन थिला केते 20% इन कैलकुलेशन ऑफ WPI CPI रे food ro weightage becomes almost 40% okay that becomes almost 50% baka 46 ki 47% this is 47% or 48% okay so this is 48% for CPI calculation रे हम यूज करछे तो मते बे को which is a better indicator of inflation is it CPI or WPI CPI yes काहे कि ना जोटा मेन जिंस हम नोचे कि फूड इन्फ्लेशन फूड बिवरेज ए सब इन्फ्लेशन फूड इन्फ्लेशन ता दैट इज माने दैट इज द मेजर फैक्टर और मेजर यू कैन से कंट्रीब्यूटर इन CPI कैलकुलेशन बट relatively that is not a major contributor in WPI calculation major होची manufactured product WPI रे 64% but CPI रे गुड माने हमरा जोटा फूड अछि तारा प्रोडक्ट तारा माने कंट्रीब्यूशन पाखा पाखी 47% ठीक अछि सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन WPI एंड CPI ओके ठीक अछि तो नेक्स्ट थिंग सो दिस स्लाइड इज क्लियर कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रे की टर्म होची कंज्यूमर माने कंज्यूमर सेगमेंट्स व्हिच कंज्यूमर सेगमेंट्स इंडस्ट्रियल वर्कर सेगमेंट एग्रीकल्चर लेबर सेगमेंट रूरल लेबर सेगमेंट रूरल अर्बन एंड रूरल अर्बन कंबाइंड ओके ठीक अछि ता माने दीज आर होमोजेनियस ग्रुप्स ता माने इंडस्ट्रियल वर्कर गोटे ग्रुप एग्रीकल्चर लेबर गोटे ग्रुप माने सब होमोजेनियस ग्रुप ठीक अछि सेति पई से माने सेपरेट करा रखाइ छै एंड प्रति सेगमेंट रो वी कैलकुलेट प्रति सेगमेंट रो कॉस्ट ऑफ लिविंग हमें कैलकुलेट करछ वी कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ ईच सेगमेंट ठीक अछि ओके फाइन नेक्स्ट why CPI important हमें फर्स्ट दिन जानिले जे फूड रो कंट्रीब्यूशन फूड रो वेटेज मोर इन CPI ओके ठीक अछि एंड CPI is the basis of calculating the dearness allowance government employee मान जो dearness allowance दिया होची that is calculated on the basis of CPI okay CPI combined जोटा हम देखु CPI combined
is the basis for inflation targeting. Inflation targeting concept कौन? What do you mean by inflation targeting? चलो पढ़े दबा. What do you mean by inflation targeting? Yes. What is inflation targeting? Inflation targeting means we will target inflation. How we will target inflation? Inflation को हमें target करिवा by our monetary policy. We will adjust the monetary policy to target the inflation. Inflation को target करिवा पई हमें monetary policy use करिवा. ठीक अछि. And this inflation targeting first came into a picture by recommendation of Urjit Patel committee. Okay, few points. Urjit Patel committee recommendation inflation targeting asthela. Inflation targeting re CPI combined was the target. जो हम पढ़िले CPI combined. बहुत जगह रे CPI combined निया होची. काहे कि निया होची ना अर्बन माने रहउछंती. रूरल अर्बन रहउची मिसी की. अर्बानाइजेशन जेहेतु बढ़ुଛି ତେଣୁ ସେ ସେଗମେଣ୍ଟ ଟାକୁ ନିହାତି ନେବାକୁ ପଡିବ ଆକାଉଣ୍ଟ କୁ. CPI combined is the target. Target କେତେ? Target होची 4 ± 2%. माने 2 to 6% is the target. 4 ± 2 माने केते? 2 to 6%. तो कमिटी रेकमेंड करथिला कि इन्फ्लेशन टाको तमे 2 to 6% भितर रखो. रखिले ही इकोनॉमी ठीक ठाक चलिबो. ओके रख केमिति रखिबो मॉनेटरी पॉलिसी चेंज करो रेपो रिवर्स रेपो ए सब जिंस चेंज करी तमे इन्फ्लेशन को 2 to 6% भितरे रख. दिस इज द इन्फ्लेशन टारगेटिंग. चलो नेक्स्ट स्लाइड को जोटा हमें थिला जो स्लाइड रे हम रहि जेतिले. यस इन्फ्लेशन टारगेटिंग पई वी आर टेकिंग सीपीआई कंबाइंड. वेरी गुड. ओके अच्छा व्हाट डू मीन बाय हेडलाइन इन्फ्लेशन एंड कोर इन्फ्लेशन. ओके दीटा टर्म डिस्कस करबा. Headline inflation माने CPI combined is the headline inflation. CPI combined is the headline inflation. Headline inflation और core inflation the difference कौन? देखिए दबा. What is headline inflation and core inflation? ठीक है ची. अच्छा. Headline inflation is CPI combined. पढ़िले ठीक है ची. It includes both volatile and non-volatile products. volatile non volatile माने कोन? volatile माने होची आजि जहार रेट कम अछि काली बढ़ी जिवो. सपोज राइस आसिलानी मार्केट को इमीडिएटली काली प्राइस बढ़ी जिवो. फ्यूएल यूक्रेन ने वार हला व्हीट रो प्राइस बढ़ी जिवो. मिडिल ईस्ट रे वार हला ऑयल रो प्राइस बढ़ी जिवो. सो फूड एंड फ्यूएल these are volatile things. And CPI combined includes or headline inflation includes both volatile and non volatile things. ठीक है को ठीक अछि. बट अच्छा काली मिडिल ईस्ट रे युद्ध चलीची. ओके इन्फ्लेशन बढ़ी गला मु कोन कली पॉलिसी मेकिंग चेंज कली टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन. ठीक अछि. ठीक ता पर दिन मिडिल ईस्ट रे वार बंद हे गला हले 2 दिन पर बंद हे गला. मु किनु कोन करची पॉलिसी मेकिंग कर दिछि टारगेट करके इन्फ्लेशन करिया पई इन्फ्लेशन को टारगेट करिया पई. ओके सो पुणी चेंज करी. सो हबो कोन जो वोलेटिलिटी अछि फूड एंड फ्यूएल रे मेजर वोलेटिलिटी फूड एंड फ्यूएल रे सेटा कोन करछि मो पॉलिसी मेकिंग को अनस्टेबल करछि. आज गोटे पॉलिसी वाली काली आ गोटे चेंज करबी पुणी ता पर न पुणी वार हे गेला गोटे कंट्री मिडिल ईस्ट रे पुणी चेंज करबी. सो पॉलिसी मेकर माने देखिले भाई ये वोलेटाइल जिंस पई हमकु सब बेले हम पॉलिसी चेंज करिया पड़िबो इन्फ्लेशन टारगेट करिया पई. तेन गोटे काम कर दवा आगु टोटल बाहर कर दवा. ओके विल एक्सक्लूड द थिंग. ओके ताकू बाहर कला पर जहां बाहरिला दैट इज कॉल्ड एज कोर इन्फ्लेशन. सो कोर इन्फ्लेशन इज यूज्ड इन पॉलिसी मेकिंग. ओके इट एक्सक्लूड्स द volatile items like food and fuel. You have to remember this much only. It excludes the volatile items like food and fuel. Okay. So it can be expressed as CPI minus effect of food and fuel. CPI ru food and fuel ro effect taku jodi hame minus kar daba that is called as core inflation. So this is the difference between headline inflation and core inflation. ठीक अछि चलो. So these are 3 important things why CPI matters. Why CPI important? DA calculation होची. Okay food component CPI रे अधिक अछि WPI अपेक्षा. Inflation targeting रे यूज होची CPI. Headline inflation CPI combined टाको हम headline inflation को. ओके ठीक अछि.
ता माने हेडलाइन इन्फ्लेशन इज द रॉ इन्फ्लेशन, रॉ, इट इज कॉल्ड एज द रॉ इन्फ्लेशन. ओके, बट कोर इन्फ्लेशन तो आम यूज करछे कोथरे पॉलिसी मेकिंग रे, ठीक अछि. एंड जेते बेला हमें हेडलाइन इन्फ्लेशन कोर इन्फ्लेशन को कंपेयर करिबा सेते बेला ही हम जानि परिबा. इनिशियली माने आइसोलेटेड कि तो वैल्यू किछि बेसी जणा पड़िबो. ओके, ठीक अछि. दिस इज द थिंग. नेक्स्ट देन आउ किछि डिफरेंस. हमें फर्स्ट स्लाइड रो किछि डिफरेंस पढिथिले डब्ल्यूपीएससीपीआई भितरे. आउ किछि डिफरेंस कोन इटा हमें ऑलरेडी जानिले. फूड आइटम्स लेस इंपोर्टेंट weightage, here it is more weightage. Okay, in WPI the inflation is calculated at each stage of production. Okay, each stage of production रे केते inflation ला सेटा calculate करा जाय. But in CPI only final product, final consumable product जोटा consumer माने market रो नेबे ता ऊपर ही calculate करा जाय. ठीक अछि. So generally जेहेतु टैक्स आसुनी, मार्केट फोर्सेस बेसी नाही, पॉलिसी माने इफेक्ट बेसी नाही, फिस्कल पॉलिसी इफेक्ट बेसी नाही. सो रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज लेस इन WPI and rate of inflation is more in CPI. These are the differences. So first point of difference is what is WPI, CPI level kono at the level of wholesaler, WPI CPI at the level of consumer. Base year, WPI base year is 2011-12. Okay, then CPI ro different base year according to your segments, but CPI combined or base year होची जोटा हमें मेजर यूज कोइ CPI combined तार base year 2012. ठीक अछि. And weightage of food products, CPI it is more, WPI it is less. ठीक अछि. Goods and services, in CPI you are using goods and services, but in WPI you are not using services, only taking the goods. ठीक अछि. So these are the things. And CPI is used for policy making. To be particular, CPI combined is used for policy making or inflation targeting. Inflation targeting में CPI combined use करा होची. Okay, and WPI is not used. WPI use करा जाउनी. Okay, ठीक अछि. So this is the thing regarding WPI and CPI. Anything that you did not understand in the discussion of WPI and CPI? Okay, ठीक अछि. Very good, clear, बहुत बढ़िया. Everything should be crystal clear. Okay, परीक्षा रे जेमती माने पढिबोनी माने मु एटा कोडी पढिथिली मने पडुनी. एमिति पिक्चर थियो माइंड रे जे अच्छा एटा पढिची एटा मन अछि रहिबो सेटा आ भूलिबोनी केबे. Okay, then GDP deflator. GDP deflator can be used to measure inflation. Okay, but GDP deflator आमे काहे की यूज करने मु कहबी. But GDP deflator माने कोन? GDP deflator means GDP at current price divided by GDP at constant price. Current price by constant price. Constant price और current price with the difference कोन? Okay, current price माने मार्केट को पळे आसला तेबेले. ठीक अछि. Constant price माने फैक्ट्री प्राइस रहला. ओके, फैक्ट तो करंट प्राइस माने मार्केट को पळे आसला. टैक्स सब्सिडी ये सब जिंस होयगला. ओके, सो करंट प्राइस डिवाइडेड बाय कांस्टेंट प्राइस. कांस्टेंट प्राइस माने हमें बेस ईयर को नेकी करछे कांस्टेंट प्राइस. Okay, constant price base year नहीं जाउछे constant price and current price केते हेची. Okay, so after मनगर 2012 रे constant price थला एति की x and 2040 to 24 रे suppose हला 3x. ठीक अछि. 3x by x, so 3 into 100% calculate करा जाय. Okay, so जदि more than one है GDP deflator, there is inflation. More than one माने कोन? Current price is more than constant price हेले ही जाय कि more than one हबो. ठीक अछि. आउ थरे current price होची numerator, constant price denominator. जदि current price अधिका हबो, constant price कम हबो, ताहले ही GDP deflator ratio टा more than one हबो. ता माने current price अधिका constant price अपेक्षा ता माने inflation हिच सरला आ कोन. माने more than one हेले एटा inflation हबो. जदि लेस देन 1 हैला ताले इन्फ्लेशन नाही आ कोन. सिंपल, as simple as that. ओके, ठीक अछि.
बट जीडीपी डिफ्लेटर कहीं यूज होनी जीडीपी डिफ्लेटर एथि यूज होनी कि सीपीआई डब्ल्यूपीआई रे हम डाटा केमति कैलकुलेशन करछे वीकली ना मंथली सीपीआई डब्ल्यूपीआई डाटा हाउ वी आर कैलकुलेटिंग वीकली और मंथली मंथली बट जीडीपी डाटा कौन मंथली मिलुची जीडीपी डाटा माने ईयर रे गोटे ईयर रे हम कैलकुलेशन करछे ओके तो सेतेबेले कोन तो अपेक्षा करिलो करे धैर्य थिले तो ओके हां ठीक अछि तो सेति पई जीडीपी डिफ्लेटर को जनरली यूज करूने ओके ठीक अछि चलो हेडलाइन इन्फ्लेशन वर्सेस कोर इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन टारगेटिंग करला लास्ट गोट रहला हमर लास्ट फास्ट माने स्लाइड को लास्ट स्लाइड को हम जिबा जोटा कि हमर बेसिक कांसेप्ट कोन टिके ये ही रहला एटा टिके हम क्लियर कर दबा ओके ठीक अछि बेसिक कांसेप्ट होची दिस इज द प्रोडक्शन हाउस ओके चिमनी बाहर से धुआं बाहर ओके ओके सो प्रोडक्शन होलसेल दुकान दिस इज रिटेलर दुकान ओके एंड यू आर स्टैंडिंग हियर सो रिटेलर पाखरे कंज्यूमर रहिला सीपीआई वी हैव डिस्कस्ड होलसेलर पाखरे रहिला गुड्स जोटा कि प्रोड्यूसर पाखरे आसीला डब्ल्यूपीआई वी हैव डिस्कस्ड गोटे जिंस रहिला प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स ओके ए गोटे जिंस हम डिस्कस करबा तापर इन्फ्लेशन कांसेप्ट खत्म प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स कौन एते दरकार पड़ला जे हमें सीपीआई छाड़ी की डब्ल्यूपीआई छाड़ी की सीधा पळाइसले प्रोड्यूसर पाखु प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स पाखु ठीक अछि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स पाखु पळाइसले देखो मु कहली कि सपोज प्रोड्यूसर हमें माने होलसेलर कथा बुझी गले भूली गले प्रोड्यूसर एट रहले कंज्यूमर ओके ठीक अछि मझरे गवर्नमेंट अछि हां ठीक अछि प्रोड्यूसर कोन कला गोटे सोप प्रोड्यूस कला तार प्रोडक्शन कॉस्ट ला 5 रुपीस कंज्यूमर ताकू किनिला दैट सोप 15 रुपीस ओके ता माने ए भितरे कोन हला जे 10 टका बढ़ी गला गवर्नमेंट कोन करछि हेपी टैक्स लगे दैछि 10 रुपीस ओके बुझो व्हाई प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स इज इंपोर्टेंट ओके प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स डेफिनेशन कहले सिंपल डेफिनेशन जे प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स इज द इन्फ्लेशन मेजर्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रोड्यूसर तो लाउ तो किछ नाही दे बट ता कांसेप्ट बुझो काहे कि इटा इंपोर्टेंट तो सपोज 5 रुपीस प्रोडक्शन प्रोड्यूसर बाहर गला 5 रुपीस रे सी गला मु भाई 5 टका आउ टंकाटे मोर प्रॉफिट ले मु बिकि देबी बट पहुंचला बेलू कंज्यूमर पाखे प्राइस हेलानी 15 टका हेची कोन मझिरे गवर्नमेंट टैक्स लगे दैछि 10 टका हेला 15 टका ठीक अछि अच्छा लोक किनि पारलेनी ओके पीपल कुड नॉट परचेज दैट ओके ता माने लोक कहले पूरा पत्रिका फत्रिका धरिकी मार्केट पळे आसले बाहर को कहले इन्फ्लेशन हे छि ओके लोक परचेज करि पालेनी इन्फ्लेशन हे छि ओके तापर लोक माने कहले नाही एबे ट्रेडिशनल वे रे जाई कि माटी घसी गाधे पड़ो आ साबुन हम गाधे पड़ो हई परिबन हैला तो गवर्नमेंट को भाई तो क्राइसिस ही गला तो गवर्नमेंट गोटे कमिटी बसेला माने माने ऑब्जर्व करिया कि एक्चुअली इन्फ्लेशन हेई छि के ठीक अछि तो कमिटी रिपोर्ट देला भाई एमान तो ठीक अछंती बट प्रॉब्लम तम पाखरे अछि व्हाई यू आर इंपोजिंग सो हाई टैक्स एते अधिक टैक्स काई दोजो माने बसो जो लोग किनि पनांती तापर गवर्नमेंट अरे अच्छा अच्छा एमती हेछि कि आमे अधिक टैक्स बसे दिचु ओ सेति पई हेछि अच्छा गोटे काम कर टैक्स कमा 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 रिडक्शन कर 2 टका दियो ओके ठीक अछि तो 2 टका देला परे अल्टीमेट प्राइस गेला केते 7 रुपीस ओनली तापर देखला बेलको समस्त घरे पूरा पेटी पेटी साबुन गदा हेछि ठीक अछि तो हला कोन आमे जानि परले कि इन्फ्लेशन होउची प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स नहीं आमे देखिले कि प्रोड्यूसर लेवल इन्फ्लेशन नहीं बट इन्फ्लेशन एट द लेवल ऑफ गवर्नमेंट टैक्स अधिक बढ़ी जाइए ओके
ताने प्रोडक्शन साइड रे किछि असुविधा नहीं। ओके आउट सिचुएशन ठीक अछि ओके गवर्नमेंट प्रोडक्शन कॉस्ट 2 रुपीस ओके गवर्नमेंट कहला मो टोटल टैक्स ही नेबिनी हां 1 रुपीस टैक्स हवा कथा 3 रुपीस बट मार्केट को प्रोडक्ट आसुनी लोक समस्ते पूरा 30 टका 35 टका धरी ठिया छन एकाधर 10 10 टा किनियो बोली बट स्टिल यू हैव नॉट गॉट दी प्रोडक्ट फ्रॉम द मार्केट तो गवर्नमेंट कमिटी बसेला गवर्नमेंट कोन हो कमिटी बसेला पर कमिटी ऑब्जर्व कला अरे भाई आमे तो टैक्स टोटली कम कर देछु बट जिंसो आसुनी एठू ओके ता माने प्रोड्यूसर लेवल ले किछि प्रॉब्लम हेछि जोति पई कि प्रोडक्शन हे परनी सप्लाई साइड रो प्रॉब्लम होउछि ठीक अछि तो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स इज नीडेड टू check or to have an idea of the supply side this is the thing okay गोटे बीएन गोल्डर कमिटी हेइतला 2014 रे ओके 2014 रे हेइतला बीएन गोल्डर कमिटी तो से कमिटी कहले कि गोटे काम कर तमे बड़ बड़ इकोनॉमी माने से माने कोन करलेनी से माने सब डब्ल्यू सीपीआई रु पळेलेनी डब्ल्यू माने डब्ल्यूपीआई रु से माने पळेलेनी पीपीआई ओके तो तेणु तमे भी गोटे काम कर जे तमे आउ धीरे धीरे एक्सपेरिमेंटल बेसिस रे यू शिफ्ट फ्रॉम माने शिफ्ट टुवर्ड्स पीपीआई प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स को शिफ्ट कर धीरे धीरे ठीक अछि तो एक्सपेरिमेंटल बेसिस रे एमति नै कि टोटल प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स हम करबा हम टोटली शिफ्ट करि परिबानी ओके एना हम स्टिल हम डब्ल्यूपीआई कैलकुलेशन करूचे सीपीआई कैलकुलेशन करूचे आ पीपीआई गोटे एक्सपेरिमेंटल बेसिस रे हम यूज करबा दैट कमिटी रिकमेंडेड ओके तो दिस इज द थिंग माने पीपीआई काहे की दरकार ना जेहेतु हमें सप्लाई साइड को जानिया चाहू जे दैट्स व्हाई नीडेड एंड डब्ल्यूपीआई जदि हमें कैलकुलेट करू नै हमें डब्ल्यूपीआई रु कैलकुलेट करू नै सीपीआई तो अछि छाड़ डब्ल्यूपीआई कैलकुलेट न करी कि हमें पीपीआई कैलकुलेट करूचे ताहाले हमें कोन करबा आउ मझिरे टैक्स फैक्स किछि नै डायरेक्टली हमें पीपीआई कैलकुलेट करबा ओके एंड डब्ल्यूपीआई पीपीआई इथ पई माने इंपोर्टेंट कि हमें कमिटी भी रेकमेंड करथले कि हम जेते एक्सपोर्ट जहां भी होची तार भी माने तार भी कंपोनेंट रहइबो तो इट विल बी एन होलिस्टिक इंडिकेटर ऑफ इन्फ्लेशन ठीक अछि सो यू ग्रेजुअली शिफ्ट डब्ल्यूपीआई टू पीपीआई एंड एक्सपेरिमेंटल बेसिस रे स्टार्ट भी करो और रेकमेंड करथले पीपीआई बट एते जिंस नै हम मन रखिया अछि कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स कोन एंड प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स दरकार कोन पे प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स होची it changes in the price level from the perspective of producers okay ठीक अछि so this is the thing and out in so होची कि और मेजर इकोनॉमीज जो माने जो कहले कि मेजर इकोनॉमीज माने अछि यूएसए they have माने already switched they are माने computation from WPI to producer price index okay so this is the thing you need to remember okay so we have discussed all the things in inflation okay inflation रे सब जिंस आमे डिस्कस करी सारिलेनी कहा को बुझियलानी जहा पढ़ा हला किछि बुझियलानी प्रॉब्लम हला ना सब क्लियर हला इकोनॉमी इज द थिंग यू नीड टू विजुअलाइज कोन होउची ओके तो यदि पिक्चर आसीगला माइंड रे इट इज वेरी इजी ओके ठीक अछि ओके बुझियला ओके बहुत बढ़िया